Hello students, good morning. Welcome to MGM Education. This is plus 3 English, alternative English. We are going to study the lesson, the way to equal distribution. That means equal distribution of wealth among the people of a nation. How this is possible, and if this happens, what will be the benefit, and how can the social justice can be restored in the society is the subject matter here described by MK Gandhi, right? A freedom fighter, a leader, father of the nation of India. Let us go and study the lines of the lesson. See what he says, that the real implication of equitable distribution is that each man shall have the means to supply all the natural needs and no more. He has given an item, means example, that what he says, you listen. If a man has a weak digestion and requires only a quarter means one fourth of a pound of flour to his bread, and another needs a pound, देखो ये दुईटा लोक को नेला जन को क्वार्टर ऑफ द पाउंड चुना फ्लोर बोले लुड़ा ब्रेड पाए रोटी तैयार करिया पाए आउ जन को गोटे पाउंड लुड़ा सो एमती करिवार छी जे डिस्ट्रीब्यूशन बोथ शुड बी इन ए पोजीशन टू सैटिस्फाई देयर वांट उभय जाक निजर वांट सैटिस्फाई करिवारे सेटा मेंटेन करि परिबा छी to bring this ideal and आदर्श into being माने being into use entire social order बोले सामाजिक order, right, धारा has got to be reconstructed पुनर्निर्माण करिबा छी. A society based on non-violence cannot nurture. आओ से कहउछंती that we may not perhaps बोध हुए be able to realize आमे realize करि परिबाने the goal माने लक्ष्य, but we must bear it in mind बोले we must keep this idea in your mind माने मनोभाव रे हमर से प्रकार चिंताधारा विकास करिबा छी so that we can get contentment माने satisfaction happiness संभव society रे. It's all possible when there is equitable distribution of wealth among the people. It's a trusteeship विषय मध्य कहते, right? Trusteeship बोले कौन हम? All the rich people together form a society and keep a fund. That fund will be utilized for the benefit of the weaker section or poor section of the society when it is needed. बुझिपारलो? तो एमिति ट्रस्टीशिप काउंसिल पाई महात्मा गांधी गाँ गाँ रे मध्य से प्रचार करथिले. कहते गोटे सोसाइटी कर गोटे संगठन कर जो धनी लोक मैंने कंट्रीब्यूशन देवे से फंडटा एकाठी हो एंड जदि कि एमनकर गरीब घर मैरेज को किंबा अन्य इलनेस को पैसा अभाव हेले सेठु पैसा देवे. या द्वारा कौन हम सोसाइटी रे गोटे प्रकार हार्मोनी रिलेशंस क्रिएट हो पार. ये थिला तांकर स्वप्न. मोरओवर ही सेड दैट a person born in society should look upon himself as a servant of the society. बोले जे भी समाज रे जन्म होची समाज रे गोटे व्यक्ति निजको समाज रो सेवक बोली भाबिबा उचित. ये भावना जागृत हेले ही से he can spend some time for the benefit of the society and welfare of the people, right? से कहतिला जे there is ahimsa in his venture. His venture will car venture Mahatma Gandhi karo a concept venture. Moreover, if man's mind turns towards this way of life, there will come about a peaceful revolution in the society, that without any bitterness. Bitterness means bad relation. दूर हो and good relations establish हो पारिबो. It may be asked whether the history at any time records such a change in human nature. इतिहास रे केबे एमते हि चुकी such a change have certainly taken place in individuals. यहा व्यक्तिगत भाव रे व्यक्ति भितरे ही सृष्टि हबो. One may not perhaps बोले बोध हुए able to
point, okay, able to point to them in a whole society. Jone chahinle eta kari pariboni. But this only means that up till now there has never been an experiment on a large scale in non-violence. बोले से कहते एमती गोटे अटेम्प्ट नवा कथा जहाद्वारा नॉन भायोलेंस एस्टाब्लिश हो अहिंसा माध्यम समस्ते एकत्रित हेबा उचित somehow जमती हेले भी and other wrong beliefs whatever we have should be forgotten बोलिबा को पड़िबो. अहिंसा is definitely an attribute of society. यह सोसाइटी रो गोटे मुख्य उपादान. तो से पिला माने एटी गोटे कथा कहउचंती नॉन वायलेंस ऊपर प्राधान्य दैचंती ता सहित सत्याग्रह विषय मध्ये कहउचंती. सो 2 पॉइंट्स कवर करिया पड़िबो. देखो नेक्स्ट लाइन रे से कहउचंती टू कन्विंस पीपल ऑफ दिस ट्रुथ इज at once my effort and my experiment in this age of wonders. No one will say that a thing or an idea is worthless because it is new. अच्छा से कोई बार अर्थ ये जो नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह मे बी डिफिकल्ट कष्ट साध्य हो पारे मात्र आको मेंटेन करि पारले सोसाइटी रे हार्मोनी क्रिएट हो पारिबो सोशल जस्टिस भी रेस्टोर हो पारिबो. नेक्स्ट पॉइंट से कहते हिस्ट्री ऑफ रिलीजन बोले धर्म को मध्य प्रवेश करते चिंताधारा आइडियालिटी रे जे हिस्ट्री ऑफ रिलीजन इज फुल ऑफ सच एग्जांपल्स दैट हाउ नॉन वायलेंस एंड द वे वी शुड मेंटेन दैट वी कैन अराइव to a stage of achieving social justice and contentment माने satisfaction and happiness दीट जाक राइट. से कहते हिस्ट्री रे रिलीजन को तुम देखो ऑल द वर्ल्ड देयर आर सम एग्जांपल्स एंड केते अवतार पुरुष जो माने जन्म होइतले प्रॉफिट्स प्रचारक माने जो माने जन्म होइतले जेमते प्रॉफिट मोहम्मद जीसस क्राइस्ट से माने this idea has given to the people लोक मानन को देचंती जे religion helps us in a broad sense depends on our thoughts, ideals, beliefs that must be guided by the law of God, right. से दीटा कथा इट कहचंती गोटे law of God and आ गोटे कहचंती जे eternal law बोले कोन universal law प्रकृति रो नियम आ प्रकृति रो नियम ही लॉ ऑफ गॉड बोली कहजो. से कहते गॉड एंड हिज लॉ आर सिनोनिमस बोले भगवान बोले कौन से व्यक्ति नुहे से आईन बा नियम ही गॉड बोली से कहते राइट. जेमती कि धरी नियम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बेस करके से कहते if the rich don't become guardian of the poor जदि rich लोक guardian of the poor हबनी in true sense वास्तव रे then the latter वाले poor गरीब लोक माने okay more and more crashed and die of hunger रे मर जिवे. So what is to be done in trying to find the solution to the riddle? I have lighted बोले गांधी कहते I have lighted non-violent एको non-cooperation and civil disobedient as the right and the infallible. Okay, infallible means बोले only means infallible पिला माने correct means माने ठीक पथ right मार्ग बोले कहते कौन non-cooperation and non-violent. The rich cannot accumulate wealth without the cooperation of the poor in the society. देखो धनी लोक धनी हो बोले गरीब लोक सर्विस देले का से धनी हो पारिबो. गोटे मालिक अच्छे धरी नियो से सर्वेंट माने ताक ठीक से सेवा कले तो से धनी हो पारिबो. ए कथा से मालिक भी बुझवा कथा बोलछि से आओ तांक प्रति हिंसक न होय कि तांकर
ପାଇଁ ये कौन अवदान दे पारिबो सोसाइटी को सेटा बहुत महत्वपूर्ण बोली महात्मा गांधी कहउछ एंड ही हैज ए कंप्लेन से कंप्लेन भी करछंती जे मैन हैज बीन कंजर्वेंट with violence बोले हिंसा from the beginning for he has inherited this strength from the animals in his nature पाशविकता से पशु मानक ठारो संग्रह कला बेला एटा को इनहेरिट करछि बोले निजे ही बढ़ैछि कोन वायलेंस हिंसा मनोभाव it was only when he rose from the state of quadruped means animality पाशविकता to that of a biped माने दुई पादकार अछि मनुष्यर એટલે animal to human को से कन्वर्ट होवार छी that the knowledge of the strength of ahimsa entered into his soul knowledge तापर कोन हबो when enter into the soul knowledge बोले knowledge of soul जेतबेले आसीबो लोक माननकु से माने divinely quality और divinely thought develop करिवे ये गांधी कर चिंताधारा राइट से कहते इफ दिस नॉलेज वे टू पेनेट्रेट माने भेदी जीवो टू एंड स्प्रेड अमंग द पुअर पीपल मानक भितर ए नॉलेज भी आसीगला परे दे वुड बिकम राइट स्ट्रांग एंड वुड लर्न एवं सीखि पारिबे हाउ टू फ्री देमसेल्फ तांको मानक तांके निजे केमती फ्री पारिबे मींस फ्री फ्रॉम इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पिला माने इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हेले कोन हो जानचो ना रिच बिकम रिचर हे जो पुअर बिकम पुअर हे जो तबरे सोशल रे रिच एंड पुअर रो गैप जतबेले बढ़ी जबो देयर विल बी ए चांस ऑफ रिवोल्यूशन डिस्टर्बेंस डिसहार्मनी अमंग द पीपल इन द सोसाइटी एंड कंप्लीट लॉलेसनेस हे जाई पारे तेनु से कहउचंती नॉन वायलेंस को अहिंसा को मीन्स बोले माध्यमा करी आमे समस्ते इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टाको दूर करि पारले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्राधान्य देले बोले सुषम बंटन संपत्तिर सुषम बंटन करि पारले देन वी विल हैव वी कैन लीड ए वेरी गुड लाइफ एंड द पुअर पीपल हु आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्वेशन बोले स्टार्वेशन माने खाद्य अभाव स्थिति रे जमाने रहितबे सेठु मुकुली दिबे if all will get the food to eat bed to sleep then there will be social justice सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा हबो and the society will be an ideal society बोले आदर्श समाज गठन हो पारिबो तो तांकर अंतिम ए चैप्टर लक्ष्य अछि किमती हमें आदर्श समाज गठन करि परिबा on the basis of economic rights and economic facilities से दर्शाई चलते तो चलो पिला माने एबे देखिबा हाइलाइट पॉइंट्स ए चैप्टर रो राइट ए चैप्टर कोन द वे टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन महात्मा गांधी करो हाइलाइट्स कोन कोन जदि देखिबा तो से कहउचंती हाइलाइट नंबर 1 इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आयर सुषम बंटन आ पाई जो सब उपाय अवलंबन करिवो ताई बेतर फर्स्ट आछि नॉन वायलेंस एंड चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैन टुवर्ड्स सोसाइटी सेकंड आछि सत्याग्रह विषय सेते बेसी एक्सप्लेन करनांती टिके मेंशन करिवो नॉन वायलेंस को से बहुत ट्रेस दैचंती तापरे चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल 3 नंबर 4 नंबर होची रिलीजन केमती ए केस रे हमको हेल्प करिवो 5 नंबर से कहचंती नॉन वायलेंस माध्यम रे राइट आमे फाइट करिया पड़िवो नेक्स्ट पॉइंट रे सोशल जस्टिस ऊपर से बेसी गुरुत्व देचंती या द्वारा हमर सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा हे परिवो तापरे सोसाइटी आइडियल सोसाइटी रो एस्टैब्लिशमेंट बोले आदर्श समाज केमती गठन हे परिवो नेक्स्ट हाइलाइट होची रिच एंड पुअर रो गैप ता आमे कमे दे परिवा जा फल रे आम सोसाइटी बिल्ड हे परिवो स्ट्रांगली एंड with complete happiness and contentment बोले satisfaction so ए पाठरे एटा थिला सारांश so ए पाठर क्वेश्चन आंसर को जीवा बोले पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन अछि
What is non-violence? कौन? Gandhian ideology of non-violence means not to violate anybody. इट्ठी से कहते कौन? Rich should not violate the poor. माने धनी लोक माने गरीब लोक मान को हिंसा करवा उचित नुहे. बोले in peaceful manner we should have to fight to achieve our end. Non-violence रे से इति कहते. अच्छा से कहते. Next question, how does means define the ends? देखो पिलाने means बोले माध्यमा आउ एंड बोले लक्ष्य. इट मीन्स होचे हमर नॉन वायलेंस, माध्यमा होचे हमर सोशल जस्टिस बा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तापर कहते व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज एसेंशियल, अत्यावश्यक. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ संपत्तिर सुषम बंटन से एक्चुअल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होचे तांकर विषय. ऊपर से कहते जे इट इज एसेंशियल, अत्यावश्यक. व्हाई काहेकि काहेकि ना आंसर तो सीधा जना पड़ जाउची. सोसाइटी रे द रिच एंड पुअर गैप को कमेवा होचे आरो लक्ष्य. ना कमेले कोन हबो? गोटे स्ट्रांग एंड आइडियल सोसाइटी हे परिबो. सोसाइटी रे पीस रहइबो एंड समस्ते समान फील करी आनंद रे लाइफ मेंटेन करि परिबे. अच्छा एक दुई रे पॉवर्टी मध्य केतेकांश रे दूर हो पारिबो, दारिद्रता. राइट. सो 4 नंबर से क्वेश्चन पचारचंती हाउ कैन वी इराडिकेट पॉवर्टी. इराडिकेट माने दूर करि परिबा. बोले आंसर एम देबो जे वी कैन इराडिकेट पॉवर्टी with the help of equitable distribution of wealth, so that the rich people should change their attitude of mind to help the poor people and save the poor people from the state of starvation. मुख्यतः खाद्य वस्त्र अभाव से दूर कर पारे नो पॉवर्टी. दैट मीन्स पॉवर्टी कैन बी इराडिकेटेड. इराडिकेटेड माने रिमूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने 5 नंबर पचारछि व्हाट इज सोशल जस्टिस. देखो से गांधी कौन कहते सोशल जस्टिस ऊपर सेटा से पचारनी. व्हाट इज सोशल जस्टिस पचारछि. तेणु तमे आपको ठीक से बुझा पड़ो. ये आम बुझा पड़ो सोशल जस्टिस मीन्स सोशल इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन दी सोसाइटी. एमती कहि परिबा ना. पहले सोशल जस्टिस को जीवा पूर्व आम टिके फास्ट देखा जस्टिस बोले कौन. जस्टिस मीन्स गिविंग पीपल देयर ड्यू शेयर. जार भाग ताकू समान भाव रे दबार छी. इम्पार्शियलिटी पार्शियलिटी न करके तेबे सोशल जस्टिस रेस्टोर हो पारिबो. देखो तुम घरे मन करो गोटे एप्पल आनले 4 जण अछ समान 4 फाड़ करके बांटिबो सेटा हबो जस्टिस. सो यू गॉट फैमिली जस्टिस. सोसाइटी रे ठीक सेमती संपत्ति को समान बांटिले कोन हबो सोशल जस्टिस रेस्टोर हो पारिबो. ही सेज लाइक दिस. सो सोशल जस्टिस मीन्स प्रोवाइडिंग पीपल ड्यू शेयर इन दी सोसाइटी. चलो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 6 नंबर. हाउ कैन वी अप्लाई गांधीयन आइडियल माने आदर्श टुडे. आर आंसर कौन हम ना. वी कैन अप्लाई गांधीयन आइडियल टुडे थ्रू ट्रस्टीशिप काउंसिल. बेले गाँ मन करे किंबा विभिन्न अंचल रे ट्रस्टीशिप सोसाइटी गठन करके से सोसाइटी फिलंथ्रोपिक सर्विस बोले जनसेवा पाई बोल की वेलफेयर ऑफ द पीपल पाई बोल की कार्यकारी कला भाया हो पारे ना. वी कैन एडप्ट द गांधीयन आइडियल ऑन द सोसाइटी. ताको से गांधी निज भाषा रे ट्रस्टीशिप काउंसिल बोल की कही प्रत्येक गाँव रे गठन करा जाओ. धनी लोक माने ताको पैसा कंट्रीब्यूट करंतु गोटे फंड रहिबो. आ गाँव रे जाको भी जेतोले कोन असुविधा हला बेले से फंड रो काढी से पैसा डाइवर्ट करके हेल्प करा हबो. राइट. नेक्स्ट जीवा पिला माने 7 नंबर क्वेश्चन. 7 नंबर क्वेश्चन होची डज वायलेंस इन एनी वे सर्व्स एनी पॉजिटिव गोल. कौन हिंसा केवल पॉजिटिव गोल रे सर्व करि परिबो की. आंसर तो सीधा तुम जानथिबो नो लिखिबो. नो वायलेंस इन नो वे सर्व द सोसाइटी पॉजिटिवली. इट कैनॉट गिव एनी पॉजिटिव गोल. तापर ता सहित आ गोटे खंड अच्छे पिला माने व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह. देखो सत्याग्रह ऊपर से इंपोर्टेंस देनी बोली मु तुम कहतुली किंतु सत्याग्रह ऊपर गोटे क्वेश्चन अच्छी. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह.
अच्छा फेले इठी तुम जानिबा छ सत्याग्रह रो मीनिंग कोन तापर गांधी को रेफरेंस देकी कहबा पड़िबो ओके चलो डिस्कशन करवा सत्याग्रह मीन्स सत्य को आग्रह करवा मीन्स लव टू ट्रुथ बी ट्रुथफुलनेस बोल से कहते अच्छा इठी व्हाट इज योर ओपिनियन बोले इट्स ए गुड आइडिया सत्याग्रह रे से नॉन वायलेंस करचंती नॉन कोऑपरेशन करचंती आ माध्यम रे देश को स्वाधीनता आन देचंती तो से कौन कहचंती देखो इट गुड लाइन अच्छी ए विषय रे I have lighted non-violent, non-cooperation and civil disobedience as the right and infallible well correct means well madhyama to achieve the end well goal right so तेणु से कौन करचंती सत्याग्रह सहित नॉन वायलेंस को अटैच करिकरी आमे जदि देशर स्वाधीनता पाई पारले आमे समाज को काई सजाड़ी पारिबानी इट्स पॉसिबल व्हाट ही सेज अबाउट राइट सो पिला माने मन रखिथिबो महात्मा गांधी नॉन वायलेंस गोटे सत्याग्रह गोटे ये दीटा टॉप इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच